from a bona fide spiritual master. In our Vedic literature, we learn that the grahasthas or the householder devotees must perform this process by engaging their material opulences, their material possessions in the service of the Lord. The Lord doesn't want you to engage some paid servants to do so. The Lord wants you yourself to do His service. The best example of a personality who adhered to this process was Maharaj Prithu, who used all his royal possessions in the service of the Lord. भक्ति का छठा प्रकार है वंदनम। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप विग्रह को में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर से सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। The sixth process of devotional service is Vandanam, which implies offering our prayers unto the Lord. You see, when one understands that the Lord has unlimited transcendental qualities and opulences, one offers their praise unto Him. Kunti Maharani and her 5 sons, the Pandavas, were constantly tortured by Duryodhan, by his father Dhritarashtra, by many people in Hastinapur. Yet after all this, after the great war Mahabharata happened, she offers her praise unto the Lord, saying, "O Lord, I want these calamities, these obstacles to come to me again and again." Why? This is because through this I will also be able to see you again and again. For this would imply I will not be thrown into this ocean of birth and death. The best example of a personality who adhered to this process was Akrura, a chief of Kamsa who offered his prayers unto Krishna while traveling to Vrindavan. भक्ति का 7वां प्रकार है दास्य। एनीबडी गैस? दास्य भक्ति किसी को पता है? एनी गैस? ओह वेरी गुड। दास्य भक्ति नंबर 7वें पे ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें रामायण के द्वारा मिलता है, जिसमें हनुमान जी अपने इष्ट राम की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। रात हो या दिन हो, उनके ऑर्डर का पालन करते हुए वो सदा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वो हमारे लिए दास्य भक्ति का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। The seventh process of devotional service is Dasyam, which implies being the servant of the Lord. When one realizes that we are not part of this material world, but in fact part of the spiritual world, they attain full success, which is going back to Godhead, going back home, where we originally belong. The best example of a devotee who adhered to this process is Hanumanji, who is an intimate servant of Lord Ramachandra and executed all his orders despite all difficulties. जय श्री राम, जय हनुमान। भक्ति का 8वां प्रकार है साख्य। एनीबडी गैस? साख्य भक्ति किसी को पता है? कोई बोल सकता है साख्य भक्ति आप में से? हरे कृष्णा। साख्य भक्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देते हैं अर्जुन और कृष्णा। साख्य ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने आप पाप पुण्य का निवेदन करना, इसी को साख्य भक्ति कहते हैं। The eighth process of devotional service is Sakhyam, which implies being the Lord's friend. When we become the Lord's friend, we immediately become His servant. The best example of a personality who adhered to this process was Arjuna, an intimate friend of Lord Krishna. And in fact, the Lord was so close to Arjuna that he himself offered to be his chariot driver. भक्ति का 9वां और लास्ट प्रकार है आत्मनिवेदनम। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतः सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। The last process of devotional service is Atmanivedanam, which implies complete surrenderance to the Lord. At this stage, one has no motive apart from serving the Lord. Such a devotee is described like a cow that is cared for by its master in Srimad Bhagavatam. When a cow is cared for by its master, it's not an anxiety over its maintenance. The best example of a personality who adhered to this process was Bali Maharaj, who surrendered his complete everything to Sri Vamandev. Oni-chan.
वामन देव की जय। Let's give a round of applause. Last guy, Avengers. Beautiful. ये हमें नवदा भक्ति शास्त्रों के अनुसार प्रहलाद महाराज ने बताई थी। इसके अलावा रामचरित मानस में अरण्य कांड में भी नवदा भक्ति का जिक्र है। ये इस प्रकार है, भगवान श्री राम जब भक्तिमयी शबरी देवी से मिलते हैं, तब राम जी उनको भक्तिमय भक्ति की सेवा में आगे जाने के लिए उनको नवदा भक्ति का सूत्र बताते हैं। जो नवदा भक्ति का सूत्र इस प्रकार है, नवदा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुन गुरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पंकज सेवा तीसरी, भक्ति अमाना। चौथी भक्ति मम गुरु गण करई, कपट तजी चागना। मंत्र जाप मद तद विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दल शील विरति को बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव राम मोहिमय जग देखा, मोहे संत अधिक करि लेखा। आठवा जल लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे ऊपर दोषा। नवम सरल सब सन छल छीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। इस प्रकार रामचरित मानस में भी नवदा भक्ति का उल्लेख है। तो आज से ही हम सब अपने जीवन में भी नवदा भक्ति के सूत्र को उतारेंगे और नवदा भक्ति फॉलो करेंगे। आरुषि, we finish or we have something more? We have something more. Oh, interesting. I don't know about it. Let's continue. So now we are going to know about a personality who performed all the 9 processes of devotional service. Yes, indeed, there is such a personality. This person is called Maharaj Ambrish. Maharaj Ambrish was a great devotee of the Lord. He engaged all his 5 senses in the service of the Lord. He used his eyes in seeing the form of the Lord, his tongue in tasting the prasad, the offerings offered to the Lord, his legs in traveling to the holy places where the Lord's temple is situated, his hands in cleansing the temple, his ears in hearing the pastimes of the Lord. In this way, Maharaj Ambrish performed all 9 forms of devotional service. Thank you so much for listening to us. Hare Krishna. Thank you very much, all the children. Let me introduce all the children once again. Shravanam Parikshit Maharaj, please come forward. Kirtanam Shukdev Goswami. Smaranam Prahlad Maharaj. Pad Sevanam Lakshmi Devi. Archanam Prutu Maharaj. Vandanam Akrur Ji. Dasya Hanuman Ji. Sakya Arjun and Krishna. Atmanivedanam Bali Maharaj and Vaman Ji. Let's give a round of applause for this ISKCON children. They prepared very hard work to prepare this Navda Bhakti. और last but not the least, प्रोग्राम की डायरेक्टर में मुझे एक और जन का नाम देना है, वो है राजेश्वरी माता जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और गाइडेंस दिया नवदा भक्ति को प्रिपेयर करने में। भक्ति देवी श्रिया, Mugdha, Clara as a Bhakti Devi and Shriya as a Lakshmi Devi. Thank you, children. Hare Krishna.